Thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense, they're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you very much. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच में बताते हुए कि अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाना है, और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन शायद इसीलिए मेरी जान बची कि मैं फिर से अमेरिका को महान बनाऊं, तरक्की के रास्ते पे ले जाऊं. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapid by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. तो अमेरिका को महान बनाने के लिए भगवान ने मुझे बचाया है और अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर ले जाऊंगा, और अब अमेरिका में बदलाव की शुरुआत होगी. वो स्पेच रुकेगी, इसको साफ उन्होंने कर दिया है. और आज उन्होंने बताया कि जनवरी का जो तीसरा मंडे होता है, मार्टिन लूथर किंग डे के तौर पर भी उसको याद किया जाता है, तो उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है. And confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. हम अपने देश को, हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने ईश्वर को याद रखते हुए, साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे.
अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और यहां से अमेरिका का डिक्लाइन खत्म होता है और अब अमेरिका गोल्डन एरा की तरफ आगे बढ़ेगा। With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे बॉर्डर पर। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेशनल इमरजेंसी। तो घुसपैठ को लेकर ट्रंप कितने सख्त हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल देखिए, स्टैंडिंग ओवेशन यहां पर मिल रहा है। घुसपैठ की समस्या अमेरिका के लिए कितनी बड़ी हो चुकी थी, उनकी जीत में इस ऐलान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। घुसपैठियों को लेकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर जो उनकी सोच थी उसको लेकर उन्हें काफी सराहा गया था। तो आज उन्होंने अपनी इस मेडन स्पीच में भी ऐलान कर दिया है कि इस घुसपैठ को रोकूंगा और इमरजेंसी सॉवरेन बॉर्डर पर ऐलान कर रहे हैं। We will reinstate my remain in Mexico policy. मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। Practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. साउदर्न बॉर्डर में वो कह रहे हैं वो ट्रूप्स भेजेंगे। तो कितना सख्त उनका रवैया है। Orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. मैक्सिको बॉर्डर पर सेना भेजेंगे, साफ उन्होंने कर दिया है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है मैक्सिकन बॉर्डर पर, तो अपने इरादे साफ कर दिए। Invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down IndiaTV के costs चेयरमैन and और prices. एडिटर इन चीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के तौर पर sworn करने पर बधाई दी है। Congratulations, Mr. Donald Trump, on being sworn as 47th President of United States. The people of India and the United States share the same democratic ideal, values, and our people look forward to strong ties of friendship during your second term in office. साथ ही उन्होंने JD Vance को भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेने पर बधाई दी है। IndiaTV के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने पर, कार्यभार संभालने पर बधाई दी है और कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो सेम डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं और हम साथ मिलकर एक मजबूत दोस्ती की उम्मीद रखते हैं आपके सेकेंड टर्म में ऑफिस and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice
We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. तो ट्रेड सिस्टम को भी वो रिवैल्यूएट करेंगे और जिस तरह से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका के जो लोकल बिजनेस है उसको बढ़ावा मिले, इसके लिए वो इंपोर्ट टैक्सेस जो हैं, टैरिफ जो हैं, उनको बढ़ाएंगे. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. तो अमेरिका को एक बार फिर से समृद्ध बनाएंगे, पूरी दुनिया में अमेरिका का सम्मान होगा. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. तो अमेरिका में फ्री स्पीच की वकालत वो कर रहे हैं. त्रिपाठी साहब, ये बड़ी बात उन्होंने कही है. जी बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि सेंसरशिप एकदम ख़त्म कर देंगे और फ्री स्पीच की वकालत करेंगे, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के बरखिलाफ. तो ये बहुत बड़ी बात है. और एक चीज़ देखिए, एक बार और सुनते हो आगे क्या कह रहे हैं. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional तो जस्टिस पॉलिसी को भी संतुलित करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो जो कुछ उन्होंने फेस किया है कहीं ना कहीं अपने ट्रायल के दौरान, तो ये पर्सनलाइज्ड यहाँ पर उनके इमोशंस नजर आ रहे हैं. और देखिए, एक जो आतंकवादी संगठनों पर रोक लगाने की बात, वो बहुत महत्वपूर्ण है. Socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो कलर ब्लाइंड होगी, मेरिट बेस्ड होगी. तो रेसिज्म को लेकर भी उन्होंने अपनी सोच साफ की. It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. ये भी प्रोफेसर सिंह, मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पर एक और संदेश छुपा हुआ है. उन्होंने पहले ही बोला है कि जो फीमेल गेम्स में जो ट्रांसजेंडर घुस जाते हैं और उसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको भी हटाने की बात वो पहले कर चुके हैं. ये भी एक नया अमेरिका नजर आएगा. Members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. तो कोविड वैक्सीन, अमेरिका का एक बड़ा तबका वैक्सीन की खिलाफत हमेशा करता रहा है और उसकी कंपल्शन को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ पर. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win,
but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars. चलिए, तो पूरी we दुनिया never get ट्रंप लगातार तालियों से उनकी स्पीच पर हॉल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। कई ऐसे मुद्दों पर वो खुलकर अपनी सोच जो है आने वाले कार्यकाल की बता रहे हैं, अपने फैसले जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से स्टैंडिंग ओवेशन लगातार उनकी कही गई बातों को मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर श्वेता सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं, कर्नल राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अमित सिंह हमारे साथ हैं, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा नाथ जी स्टैंड भी हैं। प्रोफेसर श्वेता सिंह जी, आप सुन रही होंगी ट्रंप की इस स्पीच को, जो कुछ अपने इलेक्शन के कैंपेन में कहा वही कुछ वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उन्होंने बता दिया कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होने वाला है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेंट्स के मुद्दे को लेकर। जी, आई थिंक अगर आप शब्दों का चयन सुने तो बहुत एम्फेसिस है उनके 3 एस पे लेकर, सॉवरेनिटी, स्केल्स ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी। एंड अगर आप ये तीनों एस को देखें, ये इमिग्रेशन पॉलिसी से भी लिंक्ड है। तो उन्होंने बहुत ही मतलब साफ शब्दों में अपने कैंपेन में जो कहा था उसको वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज अगर आप इसको देखें तो वो रेस पॉलिटिक्स से डेफिनेटली लिंक्ड होगी। तो वो कहते हैं कि हम कलर ब्लाइंड पॉलिसी को अपनाएंगे और सिर्फ मेरिट पे काम लेंगे, बट बोथ द थिंग्स टुगेदर आर कमिंग एंटीथेटिकल। तो पहला नंबर की बात। दूसरी नंबर की बात, पूर्णिमा जी एक बार फिर से सॉरी श्वेता जी, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रोफेसर श्वेता, एक बार फिर से सुनते हैं ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. चाइना से दोस्ती की बात करते करते ये कहां पहुंच गए ट्रंप। इसीलिए कहते हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। मैं जरूर अखिल पराशर चाइना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे उनका रिएक्शन लूंगी। अखिल, यहाँ तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे और अब कह रहे हैं कि चाइना पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है। चलिए सर आगे सुनते हैं, फिर अखिल के पास दोबारा लौटेंगे। Act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls.
Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. बता रहे हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि मैं फिर से The universe of human knowledge. वापसी करूंगा बतौर राष्ट्रपति और यहाँ मैं आपके बीच हूँ. ये अमेरिका के लोगों की We work आवाज है. together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. ऐसा कोई सपना नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते. हम ग्रेट अमेरिका हैं. Stage such a historic political comeback. ये मेरी ऐतिहासिक पॉलिटिकल कमबैक है. People have spoken. जब लोगों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया था तो ये अमेरिका के लोगों का विश्वास है कि किस तरह से मैंने एक ऐतिहासिक पॉलिटिकल कमबैक किया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. आज से 4 साल पहले कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी, उसके बाद ट्रंप के ऊपर केसेस भी चले हैं और एक वक्त उनके ऊपर तलवार लटक रही थी, गिरफ्तारी की भी. और यहाँ से आज वो 47वें राष्ट्रपति बने हैं. तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल कमबैक जरूर है ट्रंप के लिए. From New York to Los Angeles, from Philadelphia to Phoenix, from Chicago to Miami, from Houston to right here in Washington, D.C., our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America, promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love it so much. We are one people, one family, and one glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will win for you. We are going to win like never before. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has पिछले been कुछ angry, सालों में violent, अमेरिका and ने totally बहुत कुछ सफर किया है, लेकिन हम अपने मुल्क को एक बार फिर से महान बनाएंगे और फिर से तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे. एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया देखेगी, तरक्की की वो ऊंचाइयां हम छुएंगे जो अमेरिका ने उससे पहले कभी नहीं छुई थी. We will be strong and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly.
and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. तो बहुत कुछ छिपा हुआ है ट्रंप की इस मेडन स्पीच में, और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि किस तरह से वो अमेरिका को एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स पर उन्होंने अपनी पॉलिसी साफ कर दी है। बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाएंगे, सैनिक भेजने की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। ड्रग माफिया पर नकेल कसने के लिए उन्हें आतंकवादी के बराबर माना जाएगा और उसी तरह से उनके खिलाफ एक्शन होगा। और किस तरह से रंगभेद नहीं बल्कि मेरिट बेस्ड तमाम फैसले लिए जाएंगे। स्टैंडिंग ओवेशन यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप को मिलता हुआ। और चीन से दोस्ती की बात कर रहे थे प्रोफेसर अमित सिंह जी, और यहां पर तो वो पनामा कैनाल वापस लेने की बात कर रहे हैं। कहा इतिहास से मतलब वो कह रहे हैं कि वो भी वापस लौटाइए, ये नहीं चलेगा।